until 2000 and until the late 90s, most of the business houses who used to be big names in India, like the Jalans, the Singhania, Yes. okay, multiple families of of Birlas, Modis, Modi, sir. वो सारे 20 नाम अगर आप याद रखोगे, वो 20 में से शायद 19 आपको मिलेंगे ही नहीं. और अभी उसके बाद 2000 से 2020 में जो जितने नए नाम जुड़े हैं, इन्फोसिस से लेकर विप्रो से लेकर अदानी से लेकर अंबानी से लेकर टाटा टाटा पुराने हाँ थे, पुराने थे चलो. और बिरला में भी सिर्फ एक कुमार मंगलम बिरला वाला ग्रुप रह गया है, बाकी सारा मतलब है, लेकिन मैं वो पिनकल. और अब तो स्टार्टअप की दुनिया के बच्चे आ रहे हैं. ये इसलिए हुआ कि दुनिया बदल रही थी, और जिन लोगों ने नए बदलती हुई दुनिया के नए उसूलों को सीखा और उसको अडॉप्ट किया, वो आगे बढ़ गए. अडेप्टेबिलिटी. हाँ, वो पीछे जो लोग पुराने काम करने के ढर्रे से जुड़े रहे, वो जैसे कि किसी ज़माने में, आज कोडैक का नाम सुना है? हाँ, कोडैक के कैमरास. Kodak used to be one of the world's biggest company when it came to celluloid films, pictures. Okay? Do you hear about Kodak anymore? No. Why? Because they did not believe. They were so arrogant about their technology and their product कि they did not believe कि digital technology will replace the traditional photography. विजन नहीं था. 10 साल आगे देखना ज़रूरी था. आज do you remember BlackBerry? हाँ, I've used BlackBerry chats. You used BlackBerry, okay. क्या हुआ BlackBerry को? उन्होंने ये नहीं देखा कि ये एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी आउट ऑफ. तो आपको लगता है एप्पल ये सब विजनरी हैं जो ये सारी चीजें बदल रही हैं, दुनिया बदल रही है. एंड यू विल सी, लेट मी टेल यू, you will see, and now I'm not only talking about India, I'm talking about the world. You will see that probably the next 20 years time, you will find that there will be 20 names that emerge and go, which will probably bring in a new product or a new service or a new technology, and then many of them will fade away like a bubble burst. Bubble burst. So what is it? That is where the sense of understanding what is happening, where the world is going, what is going to be the impact of the world, that's what is going to decide. आपको डर लगता है कि आप अडैप्ट नहीं कर पाए तो? मुझे ये लगता है कि we have done very well. हाँ. That अगर वो अडैप्ट नहीं करते तो all the whatever you mentioned about us wouldn't have happened. हाँ. I think we as a group is very agile. We are very, very aggressive. And ready to change even now. We are ready to change, and we don't have any arrogance. Yes. We are ready to listen. We are ready to learn. And we are ready to also follow. तो जब मंत्रा सही है तो नथिंग कैन गो. सब कुछ सही होगा. ये आप मुझे ले जाते दूसरे चैप्टर पे जो है बिल्डिंग इन इंस्टेबिलिटी. लोग सोचते हैं स्टेबल ग्राउंड पे ही चीज़ें सही से खड़ी होती है. आई थिंक आप लोगों ने इंस्टेबिलिटी, आई वुड वांट यू टू डिफाइन हाउ इंस्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी मीन्स इन नेपाल. पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सब कुछ बहुत स्टेबलाइज नहीं था, बट यू हैव मेड एन एग्जाम्पल कि नहीं था फिर भी हो सकता था. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज बिल्डिंग इन इंस्टेबिलिटी, द एवरेस्ट माइंडसेट, व्हिच इज योर बुक आल्सो. वी कम टू मेक इन नेपाल. I'll give you several examples. Okay, let's not only talk about Nepal. Nepal तो है ही. हाँ. Northeast in India. हाँ. Okay, Northeast in India has always traditionally been post-independence for 40-50 years. Northeast, the Seven Sisters remained under some form of a insurgency or the other. Yes, militancy. So much so that the big Indian companies never wanted to enter Northeast. And if they had to enter, their people would not like to go there. Yes. They would operate from Calcutta. Because of the Naxalites. Okay. And we saw opportunity there. If we did not enter Northeast 40 years ago with YY. Okay, and we did not build an unbelievable kind of a market in terms of total overall market size and market share.
you know, we wouldn't have become what the YY would not have become what it is today. We are in 80 countries. You chose the unstable ground to find your market. Because that's where, as I mentioned in the beginning, there was a huge entry barriers for others. So that gave us an open field. Today my friend told me entry barriers जहाँ पे हो वहाँ success और strong बनता है. बिल्कुल. इसका क्या मतलब है? बिल्कुल उसका मतलब ये है कि you know, the higher the risks, the higher the problems, the bigger the problems, the higher the rewards. But the challenge of operating in a unstable or a difficult environment full of insurgencies or full of insecurities or full of chaotic governance or corruption or whatever, it requires you to navigate yourself very, very, very carefully. One wrong move and you'll be done. It'll be the end of it. If you are, let's say, if you are operating in an environment like we used to have in Sri Lanka, like we used to have in Nepal, like we used to have in Northeast. There were warring forces, ना? अलग-अलग forces थे. कौन right था, कौन wrong था, वो judge करना मेरा as a business में मेरा काम नहीं है. मुझे दोनों से deal करना है. और इस तरह से deal करना है कि एक I should not be overstepping on the toes of the other.